Very good morning, students. I hope you all are doing great and revised your previous chapter. Today we are going to do our chapter 3, which is images, frames, and links in HTML5. So, without wasting any further time, let's dive into the chapter. The name of our chapter is Images, Links, and Frames in HTML5, and the topics which we will learn and discuss here are inserting images, linking web pages, adding audio and video, and frames. Now, key components necessary for the development of a good visual interface of a website include करते हैं text color schemes, graphic elements, and multimedia content. Now, in this chapter, you will learn to embed images, audio, and video on a web page. Inserting images. Images and other graphical elements जैसे drawings, paintings, and charts enhance करते हैं look and feel of the web page. Now, all these graphical elements are considered as image in the web page. HTML also allow करता है हमें to insert images inside the web pages through img tag, and the img tag is a container tag. It has various attributes. Now, the attributes of img tag are पहला आता है src. ये specify करता है source यानी कि URL of the image that has to be inserted in the web page. For example, img src equals to my documents यानी कि उसका link उसकी location. Width specify करता है width of the image on the web page. For example, image src उसका link then width 50%. Height specify करती है height of the image on the web page and we will just mention it in the percentage. Alignment देखता है image का alignment यानी कि with respect to the text place adjacent to the image. Image can be aligned left, right, middle, bottom and top. For example, image src is this and align right. Border ये specify करता है thickness of the border surrounding the image. For example, image src border 2. Alt ये specify करता है alternate text to be displayed in the web browser and if the provided image is not found. For example, image src alt describing the flower. अगर image by default नहीं आ पाती तो वहां पे हमने जो text दिया है वो उसकी जगह पे display हो जाएगा. Let us use the image tag to insert an image in the web page. HTML head title inserting image, head close body. इसके अंदर हम करा रहे हैं inserting image on a web page. Image src उसका link, width, height, alignment and border. Now ensure that the image which we want to insert on the web page should be saved at the same location. हमें ये देखना है कि हमने जो insert कराई है image वो उसी same location पे exist करती हो that we have saved in our HTML5, and if we want to insert an image from another location तो हमें provide करना पड़ेगा एक complete path of the image to the src attribute. For example, if your image is saved in D drive of the computer, then the path of the image will be D, then your location. Now, GIF stands for Graphic Interchange Format, JPEG stands for Joint Photographic Expert Group, and PNG stands for Portable Network Graphics. These are the common image file formats used for designing web pages. Now, linking web pages. Website एक collection होता है of web pages which are interlinked with each other and contain करते हैं related information. ये जो web pages हैं, they are linked with the help of feature of HTML called hyperlink. Hyperlink generally एक underlined text है which takes you to another web page when clicked. Generally hyperlinks जो होते हैं they are seen in blue color. Images can also be used as hyperlink. When mouse is hovered over it, the mouse pointer changes to the hand shape. जब भी कोई hyperlink click होता है its color changes to purple. HTML5 allow करता है हमें to create two types of linking. पहला होता है interlinking. तो जो process होता है linking a particular section of the same web page. यहाँ पे हम एक particular section same web page का link कर रहे होते हैं तो इसे बोला जाएगा interlinking. And in this case hyperlink and the linked section appears on the same web page. Hence interlinking is also known as internal linking. फिर आता है इंट्रालिंकिंग. ये प्रोसेस होता है जब भी हम लिंकिंग कर रहे होते हैं एक वेब पेज का टू अनदर वेब पेज ऑफ द सेम वेबसाइट या फिर अनदर वेबसाइट तो उसे हम बोलते हैं इंट्रालिंकिंग. इट इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल लिंकिंग. एंकर टैग का हम यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स इन एचटीएमएल वेब पेजेस. ये कंटेनर टैग है एंड ये यूज करता है ए हाइपरलिंक एंड स्लैश ए वेयर हाइपरलिंक टेक्स्ट और एन इमेज. नाउ ए टैग हैज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट. पहले आता है HREF. जो एट्रीब्यूट है ये स्टैंड करता है फॉर हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस एंड इट टेक्स द URL ऑफ द वेब पेज व्हिच वी वांट टू लिंक व्हेन वी क्रिएट एक्सटर्नल लिंकिंग. टारगेट. ये जो एट्रीब्यूट है हम इसको यूज करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए प्लेस इन विच द लिंक्ड वेब पेज विल ओपन. सो इट टेक्स एनी वन ऑफ द फोर वैल्यूज. पहला है ब्लैंक. ये ओपन करेगा हमारा लिंक्ड वेब पेज इन अ न्यू विंडो या फिर टैब ऑफ द वेब ब्राउजर. पेरेंट. ये ओपन करता है हमारे लिंक्ड वेब पेज को इन अ पेरेंट विंडो या फिर टैब ऑफ द वेब ब्राउजर. सेल्फ. ये ओपन करता है लिंक्ड वेब पेज इन द करंट विंडो और टैब.
टॉप ये ओपन करेगा हमारे लिंक्ड वेब पेज को इन द विंडो दैट इज ऑन टॉप इन ऑल द विंडोज. External web pages can be linked using href attribute of the anchor tab. And जो href attribute है, it takes the URL of the web page in double quotes. Syntax to create a hyperlink is href, then URL of the web page, target, blank and link text. For example, href हमने यहाँ पे URL दे दिया, target blank and about us. Now the preceding code will create a link with the name about us. When we click on the about us link, so about.html web page will open in a blank tab या फिर window. फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट को हम होम पेज बोलते हैं, जो कंटेन करता है वेरियस लिंक्स ऑफ अदर वेब पेजेस. एंड लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वेबसाइट ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल इन विच वी आर यूजिंग एक्सटर्नल लिंकिंग. होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज शोन अहेड. जैसे ये हमारा होम पेज है ऑफ द स्कूल वेबसाइट. एबीसी पब्लिक स्कूल, वेलकम टू एबीसी पब्लिक स्कूल, एडमिनिस्ट्रेशन, इवेंट्स, स्पोर्ट एक्टिविटीज, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस. नाउ प्रीसीडिंग वेब पेज कंटेन करता है 6 हाइपरलिंक्स व्हिच आर दीज. कोड टू क्रिएट द होम पेज, यहाँ पे क्या आएगा, डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल हेड, टाइटल में आ गया होम पेज, देन स्टाइल बॉडी, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया रेड, हेडिंग का हमने कलर दे दिया यहाँ पे रेड, हाइट इतना, हेडिंग 3 अलाइन कर रहे हैं हम सेंटर. नाउ फॉन्ट साइज 20 एंड क्लोज. हेडिंग 1 एबीसी पब्लिक स्कूल, कलर रेड, वेलकम टू एबीसी पब्लिक स्कूल, देन एडमिनिस्ट्रेशन, इवेंट्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट. Now in the preceding code we have seen that a tag has been used 6 times. यहाँ पे हमने anchor tag का use किया है 6 times to create 6 hyperlinks. Each link is related to a different web page. For example, जो activities हैं of hyperlink वो linked हैं with the activities.html page. Now when you click on the activities hyperlink, so activities.html web page appear हो जाएगा in your web browser as shown below like this. Now the code to create activities, इसके लिए हमने क्या किया, सिमिलर रखी हमने चीजें, बट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऑल द डिस्क्रिप्शन अलाइन, हमने उसको किया सेंटर में, ऑल द डिस्क्रिप्शन अबाउट एक्टिविटीज इन द स्कूल, डिबेट्स, डांस, डेली असेंबली, थॉट्स, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस, म्यूजिक, गार्डनिंग, रंगोली मेकिंग, इंग्लिश कॉन्वर्जेशंस, पेंटिंग्स. तो जो भी एक्टिविटीज स्कूल में होती है वो हमने यहाँ पे जस्टिफाई कर दी. एंड इन एन इंटरनल लिंकिंग हाइपरलिंक पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक सेक्शन विद इन द सेम डॉक्यूमेंट और वेब पेज. ये हेल्पफुल होता है स्पेशली जब भी कोई लॉन्ग वेब पेज को हम डिवाइड कर रहे होते हैं इनटू वेरियस सेक्शंस एंड अ लिस्ट ऑफ ऑल सेक्शन हेडिंग इज डिस्प्लेड ऑन द टॉप ऑफ द वेब पेज. और जब भी आप क्लिक करोगे सेक्शन हेडिंग पे तो आप पहुंच जाओगे रिलेटेड सेक्शन एक्सप्लेनेशन पे which is located down somewhere on the web page. This can be done using a tag as at the top जहाँ पे section headings होती हैं to be shown, वहाँ पे होगा जैसे section heading here act is the name of label given to this explanation section. This command tells the browser that hyperlink refers to the name act. जब भी when the section heading is clicked, जब भी हम section heading पे click करेंगे it will move to the explanation section. सेक्शन हेडिंग पे क्लिक करने के बाद वो हमें एक एक्सप्लेनेशन सेक्शन पे लेके चला जाएगा वेयर नेम और लेबल एक्ट एज रिटन. व्हेन सेक्शन एक्सप्लेनेशन हैज टू बी शोन राइट AID equals to act about the section heading. Now when any section heading at the top of the web page is clicked, you will be reached to the respective explanation section. Let us take an example of internal linking. The flowers.html web page contain करता है 4 hyperlinks which are linked to different sections of the same web page which they appear. Flower guide about rose, lotus, lily and tulip. Now how to create flower.html web page. यहाँ पे हमने internal linking कराई है. Body PG color light yellow and red. Heading 1 हमने center align कराई है. Image का हमने height width justify किया. Font family, font size, position relative, animation, images, trees, infinite, alternative, reverse. And यहाँ पे हमने flower guide में दिया है rose, lotus, lily and tulip. And then about rose, lily and tulip. Rose is one of the beautiful flowers in the world. ऐसे करके हमने हर एक फ्लावर का एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है. For rose, then for lotus, then for lily and then for tulip. And when we click on any link, जब भी हम किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे of that flower, we will reach to the linked section जो हमें उसका डिस्क्रिप्शन देगा. जैसे अगर हमने लोटस के लिंक पे क्लिक किया तो वो हमें अबाउट लोटस वाले सेक्शन पे ले आएगा. आप ऑल्सो यूज कर सकते हो डिफरेंट CSS प्रॉपर्टीज टू चेंज द कलर ऑफ योर हाइपरलिंक्स इन डिफरेंट स्टेट्स. There are mainly 4 states of hyperlinks which are link, visited link, hover and active.
बाय यूजिंग द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हो लुक एंड स्टाइल ऑफ हाइपरलिंक इन डिफरेंट स्टेट्स। जैसे ए लिंक, यहाँ पे आप इट इज यूज टू सेट द स्टाइल फॉर एन अनविजिटेड लिंक। A visited, it is used to set the style on a link which the user has visited. A hover, it is used to set the style on link when mouse pointer moves over it. And active, it is used to set the style on a link when it is clicked. Let us create web page to use all the properties. यहाँ पे हमने सारी properties को use किया है, जैसे हमने हाइट विड्थ फॉन्ट कलर बैकग्राउंड जस्टिफाई कर दिया। देन होम पेज के बाद में हमने यहाँ पे हम लिंक्स करा रहे हैं एज बटन। तो सीएसएस प्रॉपर्टी अलाउ करता है टू डिस्प्ले लिंक एज बटन। यहाँ पे हम अपने लिंक्स को बटन की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। एचटीएमएल कोड डिस्प्ले करेगा लिंक को एज बटन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हेड स्टाइल टाइप टेक्स्ट, लिंक विजिटेड, बैकग्राउंड कलर रेड, कलर ग्रीन, पैडिंग हमने दे दी 2 पिक्सल 25 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन किया सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। नाउ heading 1 align center, valley of flowers like this. Then image हमने एक image enter कराई, height 200 with 250, src उसका हमने एड्रेस दे दिया। then href ये हमारा लिंक हो गया। क्लिक हेयर टू विजिट द ऑफिशियल साइट, इस तरीके से हमारा हाइपर लिंक हो गया। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ऑफिशियल साइट पे रीच कर जाएंगे। एडिंग ऑडियो एंड वीडियो, अपार्ट फ्रॉम एडिंग इमेजेस टू मेक अ वेबसाइट लुक अट्रैक्टिव, आप ऑल्सो ऐड कर सकते हो मल्टीमीडिया कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो एंड ऑडियो क्लिप्स। टू एड मीडिया वी आर रिक्वायर्ड टू सेट एसआरसी एट्रीब्यूट, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके मीडिया सोर्स एंड इंक्लूड कर सके कंट्रोल एट्रीब्यूट्स सो द यूजर कैन प्ले एंड पॉज द मीडिया व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो एडिंग ऑडियो, हम ऑडियो टैग का यूज करते हैं टू एम्बेड साउंड कंटेंट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। so it will be title audio, then heading 1 align center, font color red, welcome to musical world, रेड कलर से हमने सेंटर में लिखवा दिया वेलकम टू म्यूजिकल वर्ल्ड। टी अलाइन सेंटर, देन इमेज हमने इमेज को सेंटर में अलाइन किया। ऑडियो, ऑडियो का हमने यहाँ पे उसको एसआरसी दे दिया, उसका लोकेशन दे दिया, ऑटो प्ले कंट्रोल्स, एंड दिस इज हाउ द ऑडियो विल लुक लाइक ऑन आवर वेब पेज। एडिंग वीडियो, हम वीडियो टैग का यूज करते हैं टू एम्बेड वीडियो इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। सिमिलरली जैसे हमने ऑडियो इंसर्ट कराई थी वैसे ही हम क्या करेंगे, वीडियो का यहाँ पे एसआरसी डाल देंगे टू गेट दी वीडियो कंट्रोल्स ऑन दी एचटीएमएल पेज। वेब ब्राउजर डिस्प्ले करेगा वीडियो एंड स्टार्ट करेगा उसको प्लेइंग। इन सम ब्राउजर्स यू नीड टू क्लिक ऑन द प्ले बटन टू स्टार्ट द वीडियो। Now जो ऑडियो टैग है, वीडियो टैग्स हैं, they might not work in some browsers that do not support HTML5 and the file formats. So WAV, MP3 and OGG are the file formats currently supported to embed audio. MP4, WebM and OGG are the file formats that currently supported to embed video. Frames, you have seen so far that an HTML document takes up the entire size of a browser window. But what if you want to display more than HTML documents at once in the browser window? So this can be achieved by using the concept of frames in HTML. फ्रेम्स क्या है, एक वे है जिससे हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी वेबसाइट को। ये एनेबल करते हैं यूजर को टू डिवाइड अ पेज इनटू नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर सेगमेंट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फ्रेम्स अलाउ करते हैं मल्टीपल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को टू बी प्रेजेंटेड एज इंडिपेंडेंट विंडोज विद इन वन ब्राउजर विंडो। ये हमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू डिजाइन एंड मेंटेन दी वेबसाइट दैट सिंपली डंपिंग एवरीथिंग ऑन टू वन पेज। नाउ ये जो आई फ्रेम टैग है ऑफ एचटीएमएल, ये अलाउ करता है हमें टू डिवाइड आवर ब्राउजर विंडो इनटू many sections या फिर parts. iframe in HTML stands for inline frame. For example, iframe src URL name description. और जहाँ पे URL क्या है, address of the web page which you want to display in a frame, and the iframe tag provide करेगा हमें following attributes जैसे src. It is used to specify the URL of the web page which you want to display in the frame. Then we have height, इसको हम यूज करते हैं height specify करने के लिए of the frame. विड्थ को यूज किया जाता है टू स्पेसिफाई विड्थ ऑफ द फ्रेम, एंड नेम इसको यूज करते हैं हम टू स्पेसिफाई नेम ऑफ द फ्रेम। दिस नेम कैन बी यूज्ड इन टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ द ए टैग। लेट्स क्रिएट वेब पेज अंडर द iframe टैग। तो डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेड टाइटल फ्रेम, हेड क्लोज iframe src होम, नेम iframe1, विड्थ एंड हाइट हमने दे दी, यहाँ पे स्टाइल दे दिया। देन iframe frame src activities iframe2 again width and height and its style. Now in the preceding code we have divided the browser window into two columns. यहाँ पे हमने iframe1 iframe2 दो columns में अपने browser window को divide किया है। In the left column home page of ABC public school website यहाँ पे open होगा। When we click any hyperlink from the left column, in the linked web page will appear in the right column.
Ensure that जो hyperlink है, it should contain the target attribute with iframe2 as value. Now output is a shown alongside. तो output हमें alongside मिल जाएगा. And the float and position properties of CSS are used to display frames side by side. यानी कि frames की मदद से हम क्या कर सकते हैं, side by side अपनी पोजिशनल प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो हाइड द बॉर्डर ऑफ द फ्रेम्स बाय यूजिंग द बॉर्डर प्रॉपर्टी ऑफ CSS. आप चेंज कर सकते हो स्टाइल ऑफ द बॉर्डर या फिर फ्रेम्स बाय यूजिंग द ब्रॉडर स्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ CSS. Let's do the exercise of the chapter. So our very first question is multiple choice question. That's the highlighted text or image which when clicked takes to the another web page hyperlink. Which of the following attribute is used to specify the height of the frame of the web page? Height. Which of the following attribute is not used with the image tag? Frame. And which of these attribute is used in internal linking? HREF. Now true false. We cannot specify the width and height of an image in a web page. False. The default color of the visited link is blue. False. In HTML5, audio and video tags allow us to add media to our website. True. PNG image file format stands for portable link group. False. And HREF stands for hypertext reference. True. So students, this was a complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise it again and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Then take care. Bye-bye.